Good morning, my dear students. How are you all? Children, I am sure that you all are doing great. You all must be enjoying and spending a good time at home. And I'm sure that you all are engaging yourself in some healthy activities. It's very, very important that you engage yourself in some effective and healthy way of living, right? So, children, the first thing that I want to ask when we talk about some healthy or some good habits, well, so the first thing that comes in my mind is that are you eating some healthy food items at home, or you are preferring the junk or food or the unhealthy food more as compared to the healthy food? Children, those who are eating healthy food, let me tell you that they are actually giving a very good intake to their body. They are going to grow healthier and stronger. But then, if you are eating a lot of junk food at home, then you may harm your health. You may somehow you may affect your immune system, and it will somewhere also harm your body. It will somewhere will not help you to grow properly, to gain mental and physical health, right? So children, why I am talking today about the food habits, because children, today we are going to do some activity, do something related to this topic. Yes. So children, today in English we are going to write down a paragraph writing. Yes, a paragraph writing. Children, now the first thing that will come in your mind is that what is a paragraph writing? Well, so then let me just explain you that what is a paragraph writing. So just give me a second, and here now I show you that what exactly is paragraph writing, right? So today children, as I told you that we are going to do a paragraph writing. So before you start doing the work in your English notebook, you first need to know that what is a paragraph writing. Well, you can see few things are written on your screen. So what exactly the paragraph writing is? See children, paragraph writing is nothing but a just brief piece of writing. Brief means a short writing, right? Like आप creative writing अभी तक आपने किया है, you have already done creative writing. So in creative writing, what exactly you are doing? You are given a topic or you are given a picture, and then on that picture you try to write something about it. So how you write? You collect all the informations related to that picture or related to that topic, and then according to the informations or according to the the just that you are having, you start writing on that topic or on that picture, right? So here this paragraph writing is a little broader way of creative writing. Here in paragraph writing we write a paragraph of around, you may say, 6 to 7 lines or 5 lines. That makes a paragraph, right? So a paragraph, not necessary that it should have 5 lines, 6 lines. There is no foundation that a paragraph should have this much of line. But yes, minimum a paragraph should have 3 to 4 lines, right? A minimum it should have 3 to 4 lines, right? Somewhere you also may see that a paragraph has just 2 lines, but those 2 lines are very long sentences, right? So paragraph means a particular writing which contains at least 3 to 4 sentences about some topic. किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी एक पर्टिकुलर चीज पर आपको वो पर्टिकुलर राइटिंग जो इंफॉर्मेशन देता है वो कहलाता है पैराग्राफ writing. So in this paragraph writing we generally
write about the topic that is given. For an example, if I give you a topic, a notebook, right? मैंने आपको दिखाया notebook. So first आपको notebook के बारे में क्या क्या चीजें पता है बताइए. Like notebook is made of paper, right? Notebook is used to write. So आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आप notebook के बारे में लिखेंगे. How you will write? You will frame sentences, right? One after another sentences. आप एक sentence लिखेंगे, फिर full stop लगाएंगे, फिर उसके बारे में दूसरा sentence लिखेंगे, then you will put a full stop, the sentence ends, and again you will start writing the third sentence, right? So this is how, when one after another we start writing or we write about a topic, then that particular writing becomes a paragraph. वो एक पैराग्राफ बन जाता है. लाइक मैंने जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि चलो हम नोटबुक के बारे में लिखते हैं, तो व्हाट ऑल वी कैन राइट, लाइक दिस इज अ नोटबुक, इट हैज लॉट्स ऑफ papers in it. It is made of paper. Paper is paper we get from the trees, right? The notebook is used to write. The pages are of the notebook are used to write or to draw. In the papers we can write either with the pencil or with the pen. The notebooks are a hard copy where all the written materials are kept. This is a concrete way of writing something, right? So this you can see that हमने कितने lines बनाए, हमने 5-6 sentences बनाए, and these 5-6 sentences when we write together one after another, then it becomes a paragraph. तो वो particular paragraph मुझे किसके बारे में information दे रहा है? It is giving me the information about the topic that was given to me. So what was the topic? The topic was notebook, right? So here what is the paragraph writing? I hope that you have understood now. So paragraph writing is nothing but a brief writing which describes about the topic and that supports the sentences related to this topic. उसी टॉपिक के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ उसी के बारे में नहीं, हाँ उससे रिलेटेड जो भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. जैसे मैंने नोटबुक के बारे में जब बताया तो मैंने नोटबुक के साथ पेपर्स के बारे में भी बताया. पेपर्स के साथ मैंने ये भी बताया कि पेपर कहाँ से मिल सकते हैं, राइट? मैंने साथ में ये भी बताया कि नोटबुक में हम किससे लिखते हैं, पेंसिल और पेन यूज करते हैं. ये नोटबुक को किस तरह से यूज किया जा सकता है वो भी मैंने बताया. तो सिर्फ मैंने नोटबुक को नहीं डिस्क्राइब किया कि ये रेक्टेंगल शेप का है, इसमें कवर चढ़ा है. नो, नॉट अबाउट दैट. सी, पैराग्राफ राइटिंग इज अबाउट द टॉपिक एंड दी सेंटेंसेस, उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल्सो यू हैव टू कलेक्ट एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट. सो दैट इज कॉल्ड एज पैराग्राफ राइटिंग. ओके, सो चिल्ड्रन, टुडेज टॉपिक, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का आपका टॉपिक क्या है पैराग्राफ राइटिंग का, राइट? So your today's topic for paragraph writing is say no to junk food. Say no to junk food. Yes, and that's why I was asking you about the food habits that you have. So today children, after when we have written this paragraph writing, after the discussion, you will also get to know that which habit you are following for the eating habits that you are following. Is it a healthy eating habit that you are following, or is it an unhealthy eating habit that you are following? If you are following a healthy habit, then definitely you are going to get the benefits. But if you are following the wrong or unhealthy method of eating, then you will, somewhere you are getting a minus mark, because somewhere you are deteriorating your health, right? You are compromising on your health, and that we should not do it, right? So children, let's first gather some information about this topic. So what is this topic? Say no to junk food. Junk food को ना कहो. Now what is a junk food? Junk food का meaning क्या होता है? Junk का meaning आपको पता है? The meaning of junk is, the
meaning of junk is कबाड़. The meaning of junk is कबाड़. Like आपने आपके घर पर ओल्ड न्यूज़पेपर्स रहते हैं, प्लास्टिक्स रहते हैं, आयरन मेटल्स रहते हैं, जो कबाड़ के सारे आइटम्स रहते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, और जो कबाड़ वाला आता है, जंक यार्ड पर्सन आता है, उसे हम बेच देते हैं, राइट. सो वी बिकॉज क्यों हम हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ लिटर फॉर अस. वो हमारे लिए घर पे एक कचड़े हैं, एक यूजलेस आइटम्स हैं, उनका हमें कोई उपयोग नहीं है. वी देयर इज नो यूज of those things, right? So the same way some foods are also considered as junk food, kabad wale foods, the food that doesn't have any nutrients, any vitamins and nutrients in them, they are called as junk food. Now why they are called as junk food, you will come to know. So let's first collect some information about the junk foods, and then we are going to write down a paragraph writing on junk food. So first, now see here, can you see these pictures? Wow, it looks very tasty now looking at these pictures. This is a picture of a burger, chips, some fries, cold drink, again a hot dog, fried stuff, crispy something thing, then cold drink, and you can see all the fried stuff, the junk foods or unhealthy food are in this picture, right? Now why they are unhealthy, do you know? Because they have very less nutrients. इनमें कोई भी ताकत या पोषण नहीं होता है, and they contain lot of amount of sugar or salt in them, which is really very harmful for our body, right? And this harm, जो ये harm हमें करते हैं, ये short term के लिए नहीं होता, it is for a long term. हमारे long term के लिए हमारे body को ये ill कर देते हैं, बीमार कर देते हैं. इनफैक्ट मैं कहूँगी परमानेंटली हमारे बॉडी पार्ट्स को ये डैमेज करते हैं if we eat them very often, right? So these are very unhealthy food, and they are less in nutrients, they are not good for health. You may ask to any doctor, no doctor will advise you to have these foods all every day or even frequently also, right? Even all the doctors will also tell you that you should avoid eating them. Sometimes it's okay, like once in a month, twice in a month, it's perfectly fine. But if every week we are consuming some food like this, then definitely we will have to pay price for our health, right? So now let's see the next picture, children. Here in this picture you can see about the side effects of junk food on kids. Like as why I'm talking about the kids, well, let me first clear this thing. ये junk food सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को, बूढ़ों को, हर एज के ग्रुप के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है. सो नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ बच्चों को नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए. बट टुडे as you kids are sitting here in front of me and I am teaching you and I am telling you about the ill effects of the junk food, so I am going to talk about the side effects that are there for you all. So what are the side effects? Let's first know about it. The first side effect is obesity. Yes, what do you know what is obesity? Obesity means मोटापा. सी एक बच्चा होता है जो हेल्दी बच्चा होता है, जिसके चर्बी चीक्स होते हैं, हेल्दी होता है, राइट? सो वो बच्चा अलग दिखेगा अगर वो हेल्दी है. बट एक बच्चे को आप देखेंगे कि वो बहुत चर्बी तो हो गया है, बट वो ज़्यादा भाग नहीं सकता, थक जाता है, जैसे ही थोड़ा दौड़ता है थक जाता है, वो उसका माइंड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा पढ़ता है तो थक जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, बीमार जल्दी पड़ता है. So why it is so? Because
क्योंकि पहला बच्चा जो है वो हेल्दी फूड खाता है, इसके कारण वो हेल्दी बना है। दूसरा बच्चा भी आपको हेल्दी लग रहा है देखने में, बट एक्चुअली वो अंदर से बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इनफैक्ट वो अनहेल्दी है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको जंक फूड करता है वो है ओबेसिटी बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, लैक ऑफ एनर्जी, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, दे आर वेरी लेस इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, यस, मेंटली भी ये आपको इल करता है। हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे खा रहे हैं तो हमारा दिमाग प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है, हम इंटेलिजेंट नहीं बन पाते हैं, राइट। देन इट ऑल्सो इफेक्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक के डाइजेस्टिव, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में जो हमारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है, और हमको फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। एंड यस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। So we should completely avoid eating junk food. Now you can hear, you can see that why you should eat healthy food. Now it depends on you. You can see these two person, you are what you eat, आप वही बनेंगे जो आप खाएंगे, तो आपको चुनना है, you have to decide that what you want to eat. If you want to eat all these items which are called as junk food, right, so you will turn out into this body, आपको ऐसी बॉडी मिलेगी। और अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं which are called as healthy food, so you will get this kind of body. Now you decide which body you want when you grow up. आप कैसी बॉडी चाहते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे? आपको ऐसी बॉडी चाहिए जो कि अनहेल्दी है, मोटापा हो, आप हेल्दी ना दिखें, आप अच्छे ना दिखें, या आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, अच्छी हाइट, अच्छी फिजिक, अच्छा स्किन, अच्छी बॉडी, physically and mentally fit, right? So which one, if you want to choose this body, then you may continue eating junk food, and if you don't want this kind of body, then you have to opt for healthy food, right? So that's it for this, about this information I've already shared. You can see these are some healthy food items like vegetables, grains, pulses, milk. These are the healthy food that we should eat or consume uh, much as compared to the junk food, right? So children, I hope that now you will be able to write a paragraph writing about the topic, that is say no to junk food, right? So just give me a second, and here let me just make some change first. Okay, so now here I show you. So what you are supposed to do now, please open your notebook, English notebook, and in your English notebook, in your B notebook, you have to write down paragraph writing in English B notebook. So open your English B notebook and write down today's date, that is 4/9/20, and write down the homework in one of the page, in a fresh page, new page. And what is your homework? Draw and color the picture of some junk and healthy food, right? So आपको कुछ junk food के pictures बनाने हैं एक साइड में healthy foods के picture बनाने हैं. So I have just given an example. I am not saying that you have to draw the same picture, but yes, this is just an example that I have shown you. You may draw the pictures related to this what I have just illustrated here in this example. So healthy food contains all the vegetables, eggs, meats, pulses, grains, and unhealthy food contains all these things like you can see here: donut, chips, pastries, pizza, cake. All these things are
unhealthy food. Now it depends on you what you want to eat, right? So now, after writing down the homework, in the next page, you will write down today's date, that is 4.9.20, and write down the classwork CW. Everybody has written date and classwork? Now, once you have written date and classwork, in the first line, please write down the heading paragraph writing on. Paragraph writing on. And the spelling of paragraph is P-A-R-A-G-R-A-P-H. Paragraph. And the spelling of writing is W-R-I-T-I-N-G. Writing. Paragraph writing on, and the topic is say no to junk food. Say no to junk food. So this is your topic to write about the junk food, the ill effects of junk food. Okay? Say no to junk food. So in the second line, write down the name of the topic that is say no to junk food in inverted commas. Okay? So now we will start writing a paragraph. See, can you see this? We are supposed to write the sentences one after another. एक के बाद दूसरा लाइन लिखना है. ऐसा नहीं हमें करना है कि ये नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3, ऐसे नहीं करना है. Now you are a grown up child. आपने क्लास 1 में लिखा था, लेकिन क्लास 2 से अब आप करेक्ट फॉर्मेट सीखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है. पैराग्राफ को इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, नंबरिंग करके नहीं लिखा जाता. यू कैन नॉट राइट द पैराग्राफ बाय नंबरिंग 1 2 3 4, राइट. यू हैव टू, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट अ पैराग्राफ. सो हमने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है. सो दिस पैराग्राफ कंटेन्स 1 2 3 4 5, just 5 to 6 lines, right? Okay, so now let's start writing. So what it is? Good health is the necessity of life. पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा है? Good health is the necessity of life. Good health, एक अच्छी हेल्थ हमारी नेसेसिटी है लाइफ की, ज़रूरत है लाइफ की. नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत. जिंदगी में जीने के लिए, हमें लाइफ को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा हेल्थ चाहिए, राइट. अगर हम हमेशा बीमार रहते हैं तो क्या हमको अच्छा लगेगा? विल वी लिव हैप्पीली इन आवर लाइफ? नो, वी कांट लिव हैप्पी इन आवर लाइफ इफ वी आर ऑलवेज इल. तो हमें अगर हेल्दी रहेंगे तो हम एक अच्छा लाइफ जी सकेंगे, राइट. सो गुड हेल्थ इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ. Now, the next sentence is junk food is not a healthy food for our body. Junk food is not a healthy food for our body. Junk food हमारे health के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बॉडी के लिए एक ये healthy food नहीं है junk food. So now in the third line, थर्ड सेंटेंस में हमने क्या डिस्क्राइब किया है कि जंक फूड्स क्या क्या होते हैं. लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, कॉमा चिप्स, कॉमा बर्गर, कॉमा पिज्जा, etc. Now what is the meaning of etc? etc means etc. जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना इत्यादि, आदि मीन्स और भी बहुत सारे. एक्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारे. So soft drink, comma chips, comma burger, comma pizza, etc. are the examples of junk food. So क्या लिखा है इस थर्ड सेंटेंस में? जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, पिज्जा इत्यादि और भी बहुत सारे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं
जंक फूड के एक एग्जाम्पल्स हैं, ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, राइट? Now, in the fourth sentence, what we have written? Junk food contains high level of fat and sugar. Junk food contains high level of fat and sugar. जंक फूड कंटेन करते हैं, कंटेन मीन्स उनमें है, जंक फूड में क्या है, हाई लेवल, बहुत प्रचुर मात्रा में, ऑफ फैट एंड शुगर, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? जिससे कि कैलोरीज बढ़ती है बॉडी की, और मोटापा बढ़ता है, चर्बी बॉडी में बढ़ता है, राइट? सो नाउ द फिफ्थ लाइन, इट इंक्रीजेस ओबेसिटी. इट इंक्रीजेस ओबेसिटी, ये बढ़ाता है ओबेसिटी. नाउ मैंने पहले आपको ओबेसिटी का मीनिंग बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी? द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी इज मोटापा, right? The meaning of obesity is motapa, right? It increases obesity. It increases obesity. Spelling of obesity is obesity, obesity. Now the sixth line is, it is not easy to digest. It is not easy to digest. ये आसान नहीं है डाइजेस्ट करना, इन्हें डाइजेस्ट करना, इन्हें पचाना आसान नहीं होता है. आप एक सिंपल एग्जाम्पल घर पर खुद से करके देख सकते हैं बेटा. आप घर पर आटा, मम्मा जो जिसकी रोटी बनाती है, तो वो जब मम्मा आटा सानती है ना, आटा रोटी बनाने के लिए, सो आप आटे को पानी में डालिए, ठीक है? और दूसरे साइड में मैदे का बना हुआ, जो फ्लोर का, वाइट फ्लोर का मैदे का बना हुआ, जैसे मैगी है या चाउमीन है, उसका कोई एक छोटा सा पीस आप दूसरे बोल में पानी में डालिए, ठीक है? सो दो बोल लीजिए, एक में आप आटे की बनी हुई चीज़ डालिए, एक में आप मैदे की बनी हुई चीज़ डालिए, एंड आप देखेंगे कि आटे की बनी हुई चीज़ बहुत ही जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, बट मैदे से बनी हुई चीज़ें पानी में डिसॉल्व जल्दी नहीं होती है, वो बहुत टाइम लेती है, तो भी वो कंटेंट एक रह जाता है, राइट? सो ये क्यों होता है? क्योंकि समवेयर मैदा से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम जंक फूड कहते हैं, ये समवेयर एक राइट वे नहीं है फूडिंग का, एंड ये हार्मफुल चीज़ें हैं. So that's why it doesn't get digested easily. But whereas healthy food जो होते हैं, वो बहुत ही आसानी से digest हो जाते हैं, right? So the sixth sentence we have written, it is not easy to digest. And the last sentence is, the seventh sentence is, we should avoid eating junk food in order to enjoy the good health and happy living all through the life. हमें क्या है, फिर से मैं पढ़ती हूँ. We should avoid eating junk food in order to enjoy the good health and happy living all through the life. हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड खाना, इन ऑर्डर टू, इसलिए जिससे कि हम एंजॉय कर सकें एक अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ एंड हैप्पी लिविंग, खुश रहकर ज़िंदगी हम अच्छे से, खुशनुमा ज़िंदगी हम जी सकें ऑल थ्रू द लाइफ, पूरी ज़िंदगी. इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जंक फूड को खाना अवॉइड करना होगा. मैं ये नहीं कह रही स्टॉप ईटिंग जंक फूड, आई एम सेइंग अवॉइड ईटिंग जंक फूड. अवॉइड मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवॉइड करिए, कम खाइए. नॉट ऑलवेज यू शुड ईट, समटाइम्स यू कैन ईट, राइट? So you have to write it down in your notebook, and after writing you have to draw a line so that it shows that you have completed your work.
नॉट नेसेसरी कि आपका एक पेज में ही ये आ जाएगा बेटा। अगर आपका एक पेज में सारे 7 लाइंस नहीं आते हैं तो आप नेक्स्ट पेज में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? So now let me read this out once again for you. Good health is the necessity of life. Junk food is not a healthy food for our body. Soft drink, chips, burger, pizza, etc. are the examples of junk food. Junk food contains high level of fat and sugar. It increases obesity. It is not easy to digest. We should avoid eating junk food in order to enjoy the good health and happy living all through the life. Good health is the necessity of life. Junk food is not a healthy food for our body. Soft drink, chips, burger, pizza, etc. are the examples of junk food. Junk food contains high level of fat and sugar. It increases obesity. It is not easy to digest. We should avoid eating junk food in order to enjoy the good health and happy living all through the life. So, hope children that you have understood it and you have to write it down in your notebook. Complete the work in your B notebook. Again, I am repeating, complete the work in your B notebook. Draw the pictures and yes, please implement it in your life. Do avoid eating junk food and frequently eating junk food. You have to avoid it and sometimes you may eat it, right? So more of healthy food and less of junk food. That's it for today. Take care of yourself. Keep yourself healthy. Bye.